lot of people here today. We're going to talk a lot about gay rights. We're going to talk about LGBT. We're going to talk about homophobia. I think in all of this, there's just one thing that I think is very, very important for everyone to take away. What we're talking about today are human rights. We're talking about basic human rights. We're talking about not discriminating against people based on the way that they look, based on their sexual orientation, based on who they choose to be in a relationship with. These are basic human rights. And in the midst of all this, there will be talks on morality, on legality. I think the important takeaway is this. You combat discrimination by changing the heart and the mind and the soul. And that's what we are here to do today with our Free and Equal campaign's new endeavor, our video, The Welcome. That with this video, we would like to use the universal language of music to communicate to one and all that together we will build a world that is free and equal. The state and the federal government start taking the responsibility of sexual minority people, immaterial whether they are gay, lesbian, transgender, or in this region of Asia Pacific, जैसे हमारे पास हिजड़े हैं, तो Asia Pacific में बहुत सारे countries के पास, there are many other minorities like me of transgenders, there are baklas, there are varias, there are this. So this is the right time, and the judiciary has literally told the government, federal and state of Union of India, to respond in 6 months. And the curative petition which is there is one more sigh of relief that the half-won battle which we are fighting, together we will win it and have one more golden era where we can be proud of our judiciary and being the largest democracy of the world. I am a child of a Christian mother and a Hindu father. I've been asked all my life, what are you? What are you? What are you? So it was always, I used to always turn to my parents and ask them, what am I? So they said, choose for yourself. Now my parents said that to me and I chose a lot for myself. No religion teaches you to discriminate, to insult another human being's basic right. That's what every religion teaches you. ये सब्जेक्ट विवादक सब्जेक्ट चुनने का अभी मौका है नहीं कि मैं हमेशा इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हूँ एंड आप भी मेरी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद अटेंड कर चुके हैं पिछले 9 साल से या सो जो इंसान 9 साल से इस विवादक सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है उसका इस सब्जेक्ट को लेकर वापस आने का सवाल उठता ही नहीं है इफ यू टॉकिंग अबाउट माई रिटर्न इट वुड बी इन द नेक्स्ट नो एंट्री सीक्वल कि whenever there is a revolution or a movement, okay, हजारों लोग साथ चलते हैं एक क्रांति में और हजारों लोग ऐसे होते हैं जो कि उंगली उठा के पॉइंट करते हैं तो वो तो हमेशा रहेगी बात जब हम कोई मुद्दा उठाएंगे तो हजारों लोग हैं जो शायद अग्री ना करें लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज नॉट अ रियलिटी राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि सती बंद करो तो उन पे कितना कटाक्ष हुआ पूरा अनदेखा कर दो आप समाज के लोगों को कीड़े मकोड़ों को भी लॉ है उनके संरक्षण के लिए पर मैं मनुष्य होते हुए या हमारे लोग मनुष्य होते हुए लॉ नहीं है ये हमारी लड़ाई मुगल हरम का कौन सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखते थे किन्नर जी और किन्नर बहुत अच्छी तरीके से औरत का ख्याल रख लेंगे और जब तक हमारी बहन पे या सलीना जो चाहे वो तो मैं एक किन्नर हूं अब यहाँ पे गे भी रहेंगे बाइसेक्सुअल भी रहेंगे लेस्बियंस भी रहेंगे इतना बड़ा मोर्चा कोई बाबा कोई पॉलिटिकल लीडर तोड़ नहीं पाएगा